नमस्कार दोस्तों, वी आर बैक अगेन द थर्ड एपिसोड ऑफ सीजन 4 ऑफ लीडर्स टुडे। और आज लेट्स डिग अ लिटिल बिट इनटू द हिस्ट्री। यू नो दैट वाज मतलब करीब 10-15 साल पहले की बात है, ऑलमोस्ट 1.5-2 decades ago। आई used to travel on the NH8 और वहाँ पे आप देखते हैं ब्लू कलर के बिलबोर्ड्स लगे होते हैं, द गवर्नमेंट दैट पुट्स अप फॉर डायरेक्शन एंड ऑल। देयर वाज वन पर्टिकुलर डायरेक्शन का एक और सम अनाउंसमेंट काइंड, बिकॉज उस टाइम पे शायद बीजेपी की गवर्नमेंट थी एंड इट वाज की अटल जी का सपना था कि पूरे देश को कनेक्ट करना विथ रोड्स। द लाइफ ऑफ अ नेशन आर द रोड्स दैट कनेक्ट द नेशन टू ईच ऑफ इट्स डेस्टिनेशन। दे आर द लाइफलाइन ऑफ अ कंट्री, बिकॉज इफ यू कांट ट्रैवल टू द अदर एंड यू कांट मेक थिंग्स हैपन। आप नहीं कर पाएंगे। सिमिलरली द लाइफलाइन ऑफ अ बिजनेस इज द इंडस्ट्री कॉल्ड माइस, जिसका मतलब है मीटिंग्स, इंसेंटिव्स, कॉन्फ्रेंसेस एंड एग्जीबिशंस, क्योंकि ये वो टच पॉइंट्स हैं जहां पे आप अपने कस्टमर से डायरेक्ट इंटरैक्ट करते हैं और इसी इंडस्ट्री को एसिमुलेट करते हुए, कंसोलिडेट करते हुए, उसका मान बढ़ाते हुए और उसकी जो गरिमा है और उसका जो इंपॉर्टेंस है हम सबको बताने के लिए आज हमारे बीच आए हैं एग्जीबिशन शोकेस के मैगजीन फाउंडर एंड ओनर मिस्टर राघव खोसला। थैंक यू सो मच राघव फॉर बीइंग हियर विद अस ऑन लीडर्स टुडे। ये बहुत ही दिलचस्प एक टॉपिक है, क्योंकि आज तक इस टॉपिक पे आपने सच बताया, जब हम पहले बात कर रहे थे कभी किसी ने कुछ डिस्कशन किया नहीं, एंड इट इज सच एन इंपॉर्टेंट थिंग फॉर एनीबॉडीज बिजनेस। So, how do you feel? It's an absolute honor, Sudarshan, for me to be sitting here beside you and taking questions from you on the industry which I am so passionate about, which is the mice industry. And of course, as you rightly said, जो introduction आपने दिया है, ये industry really, I salute this industry. It's really reflecting on the catalyst. It's kind of reflection on the economic growth of India. Absolutely. जब ट्रेड फेयर होता है तो फैमिलीज, हमारी अपनी फैमिलीज तक में एक हलचल मच जाती है कि ट्रेड फेयर कब जाएंगे देखने के लिए। इट इज सच अ बिग थिंग। जैसे गांव के मेले होते हैं, जस्ट इमेजिन, जो साल में एक बार आते हैं। इट इज मतलब हर एक इंडस्ट्री, हर एक सेक्टर का एक पर्टिकुलर एग्जीबिशन है। हाउ एक्साइटिंग वुड दैट बी? एब्सोल्युटली सुदर्शन, वेरी राइटली सेड। हर एक सेक्टर में एग्जीबिशन लगता है। अब आप देखिए कि एग्जीबिशन का अगर इकोसिस्टम है, आप एज ए विजिटर आप जा रहे हैं तो आप सिर्फ देखते हैं वहाँ पे जो लगे हुए स्टॉल्स हैं। अगर आप बुक्स में रुचि रखते हैं तो आप बुक फेयर जाएंगे। अगर आप ऑटोमोबाइल्स में रुचि रखते हैं तो आप ऑटो फेयर जाएंगे। डिफेंस में रुचि रखते हैं तो आप डेफ एक्सपो जाएंगे। इस तरह से हर एक फील्ड की एग्जीबिशन लगती है। आप जिस फील्ड में हैं, आप उस एग्जीबिशन में जब जाते हैं तो आप सिर्फ स्टॉल्स को देखते हैं, वहाँ के एग्जीबिटर्स से मिलते हैं, उससे आपकी बिजनेस ट्रांजैक्शंस होती हैं। इनफैक्ट राघव, मैं आपसे बताना चाहूंगा, मैंने अपने बेटे के स्कूल में देखा है कि वो बुक फेयर लगाते हैं हर साल। So they have a book fair and people come and display their books, and किसी भी वेंडर को बुला के वो ही इतना एक्साइटिंग हो जाता है सबके लिए। सो आप जिस लेवल पे उसको डील करते हैं, आप जिस लेवल पे उसके आप जिस तरीके से उसमें समाये हुए हैं, एंड ओवर द लास्ट 10 years to come up with a magazine such as exhibition showcase, I think it would have been जैसे कहते हैं ना, लोहे के चने चबाना, मेरे ख्याल से उससे भी कहीं ज़्यादा मुश्किल होगा। बिकॉज आई नो, बीइंग फ्रॉम ब्रांडिंग इंडस्ट्री, की प्रिंट मीडिया को आगे बढ़ाना और किसी को बोलना कि आप मैगजीन में ऐड दो, वो कितना मुश्किल काम है। यस, ऑफ कोर्स मुश्किल बहुत था। देखिए, मैं वर्क करता था एक लीडिंग मीडिया कंपनी के साथ, तो मैं प्रगति मैदान बहुत यूजुअली फ्रीक्वेंटली मैं जाता था वहाँ पे अपने बॉस के साथ। तो मैं आई यूज्ड टू वंडर कि ये एग्जीबिशन इंडस्ट्री होती क्या है। आई नेवर यूज टू अंडरस्टैंड कि इसके नुआंसेस क्या हैं, कौन इसके स्टेक होल्डर्स हैं। बट मैं जब कुछ लोगों से इस इंडस्ट्री में मिला तो मैंने उनके पेन पॉइंट समझे। मैंने ये समझा कि ये इंडस्ट्री इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर आप देखिए कि अगर एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, उसके पास मार्केटिंग करने के लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। वो टीवी पे जा सकते हैं, वो इंटरनेट पे जा सकते हैं, वो न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं, राइट। बट अगर एक एमएसएमई है, उसके पास बजट्स बहुत लिमिटेड होते हैं। वो उस लिमिटेड बजट में वो मैक्सिमम अपने आउटपुट्स चाहता है। उसके लिए एक एग्जीबिशन बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म रहता है अपनी मार्केटिंग करने का, अपने बिजनेस को प्रमोट करने का और डायरेक्ट फेस टू फेस इंटरेक्शन करने का। मैं इसमें एक चीज आपसे जरूर पूछना चाहूंगा, क्योंकि आपने बहुत एक बहुत इंपॉर्टेंट एक तथ्य आपने प्रेजेंट किया हमारे सामने, दैट एमएसएमईज के लिए इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। लेकिन हमें यह भी मानना पड़ेगा राघव कि देयर आर मेनी एमएसएमईज जो शायद इसकी इंपॉर्टेंस नहीं समझते। इफ यू लुक एट द नंबर ऑफ एमएसएमईज
and the number of MSMEs actually taking part in exhibitions, I think it will be in the range of 1% and 100%. मेरे ख्याल से इतना बड़ा होगा कि इतने लोग पार्टिसिपेट नहीं करते। तो आप क्या कहना चाहेंगे उन लोगों को, देखिए ये क्यों इंपॉर्टेंट है? देखिए इसीलिए हमने ये जो हमारा जो मीडिया ये प्लेटफॉर्म है, फोकस मीडिया एग्जीबिशन शोकेस, शुरू ही इसीलिए किया था टू एजुकेट पीपल हाउ इम्पोर्टेंट एग्जीबिशन इंडस्ट्री इज। वी आर वेरी फॉर्चुनेट कि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने मेक इन इंडिया इनिशिएटिव रखा। एब्सोल्युटली। देखिए मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के आने से एग्जीबिशन इंडस्ट्री का बहुत बड़ा रोल है, उसमें इंडियन कंपनीज को प्रमोट कर रही हैं। वो इंडियन कंपनीज जब शोकेस करती हैं अपनी पावर, अपने बिजनेस को, तो फॉरेन कंपनीज जो वहाँ पे पार्टिसिपेट उनको मिलने आती हैं तो उनको बिजनेस मिलता है, उनको अपने टेरिटरी से बाहर निकल के नया पोटेंशियल एक्सप्लॉइट करने का मौका मिलता है। तो देखिए मैं उन एमएसएमईज को यही कहूँगा कि एग्जीबिशन आपके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको बहुत अच्छा रिटर्न दे सकता है विजा विज जो इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं उसके अगेंस्ट, जो कि एक बैरोमीटर होता है एक एमएसएमई के लिए, क्या किसी भी बिजनेस के लिए, जब वो अपनी मनी स्पेंड करता है कि मुझे रिटर्न कितना मिले। मैं एक चीज पूछना चाहूंगा इसके अंदर, सी जस्ट टेकिंग पार्ट इन वन एग्जीबिशन वोंट हेल्प, इट हैज टू बी अ प्रोसेस, यानी कि आपको निरंतर पार्ट लेना चाहिए, कभी इधर तो कभी उधर, तो कभी इंटरनेशनली, तो कभी सिर्फ एशिया पैसिफिक रीजन में या सिर्फ कंट्री में या डिफरेंट स्टेट्स में। How should an MSME or a participant reap the maximum by participating in an exhibition? वो क्या तरीके है? क्योंकि अक्सर अगर आप मुझसे पूछे, मान लीजिए मैं ये कहूँगा कि मैं एक बार अगर स्टॉल लगा लूँगा तो मेरे को कितना बिजनेस मिल जाएगा, ये सवाल सबके मन में उठता है। एब्सोल्युटली, आपने बहुत सही बात पकड़ी है। देखिए एग्जीबिशंस दो तरह की होती हैं, कि होती है B2C, एक होती है B2B। जो ट्रेड फेयर आपने बताया, बुक फेयर बताया, वो ज़्यादातर B2C होता है, जहाँ पे हम यूजुअली जाते हैं, रिटेल बिजनेस वहाँ पे होता है। बट जब आप B2B एग्जीबिशन की बात करते हैं तो वो वहाँ पे ज़्यादातर आपकी ब्रांडिंग होती है, आपकी ब्रांड प्रेजेंस वहाँ पे शोकेस होती है, तो वो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है। जब वहाँ पे आप अपना प्रेजेंस अपना एग्जिबिट करते हैं तो आप अपने बिजनेस को एक मौका दे रहे हैं डायरेक्ट 100, 200, 300, 500 क्लाइंट से एक दिन के अंदर वहां पे मिलने का, जो आपको बेनिफिट एक दिन में नहीं, आने वाले कई सालों तक मिलेगा। तो जो मार्केटिंग मैनेजर है उसको अपने क्लाइंट्स को समझना चाहिए, हर जैसे आपने कहा एग्जीबिशन हर जगह हो रही है। फॉलो अप इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट आफ्टर द एग्जीबिशन। इट इज अ प्रोसेस। अगर आप देखिए एग्जीबिशन इज नॉट ऑल अबाउट ROI, इट इज मोर अबाउट ROO। ROO इज रिटर्न ऑन ऑब्जेक्टिव्स। जब आप एग्जीबिशन में पार्ट लेते हैं तो आपको एक सेट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स बनाने हैं। That's a new terminology I learned today, ROO. Thank you. So उसके अंदर सिर्फ बिजनेस आपका एक ऑब्जेक्टिव नहीं होता है, मार्केटिंग आपका एक ऑब्जेक्टिव होता है, आपका ऑब्जेक्टिव होता है R&D करना, आसपास की जो कंपनीज हैं वो क्या कर रही हैं, जब आप वहां पे प्रेजेंट हैं तो आप उनको कम्युनिटी में एंटर करना सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव, बिकॉज इफ यू आर इन द कम्युनिटी देन यू आर टॉक्ड अबाउट। यस, इट्स लाइक लायंस क्लब, मतलब आप उसका एक पार्ट है, तो किसी ना किसी को पता होगा कि ऐसा भी कोई था जिसने स्टॉल लगाया था, मैगजीन निकालो जिसके अंदर लिखा हुआ है, या डायरेक्टरी निकालो, लेट्स गेट इन टच विद दैट पर्सन। यस, राइट। सी इट इज अ प्लेटफॉर्म टू एक्सप्लॉइट द पावर ऑफ नेटवर्किंग। How is exhibition showcase contributing to all of this? क्योंकि आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स शेयर करे हैं। How is exhibition showcase contributing to this entire industry? देखिए सुदर्शन, हम एक ऐसी फोकस मीडिया हैं जो इस इंडस्ट्री के लिए एक कॉमन प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे आपको ये नॉलेज मिलती है कि कौन सी जेन्युइन एग्जीबिशंस हैं जो कि वर्ल्ड ओवर उस सेक्टर को सर्व कर रही हैं, उस एग्जीबिशन के बिहाइंड जो लोग हैं, जो ऑर्गेनाइजर हैं, उनको जानने का मौका देती हैं कि आप उसको समझ सकें। अगर आप एक एग्जीबिटर हैं, एक MSME है, कि यार ये एग्जीबिशन आपके लिए सूटेबल है कि नहीं, उसमें एक्चुअल में फुटफॉल कितना था, उसके टेस्टिमोनियल्स, क्लाइंट्स जो उसमें पार्टिसिपेट किए हैं वो क्या बोलते हैं उस एग्जीबिशन के बारे में, ये सब आपको हमारे प्लेटफॉर्म के MSME और इंडस्ट्री लीडर्स उसमें आर्टिकल्स भी देते रहते हैं। Absolutely, उसके अंदर। So it's a very good showcase. And mind you viewers, exhibition showcase has over 100,000 subscribers, which is a huge number from all over the world. तो अगर आप, if you take part in that magazine, you send in your article, send in your queries, talk to the team at exhibition showcase, and you will be reaching 100,000 people every month, which is such a big achievement. Raghav, ये अचीव करना किसी भी तरीके से मैं कहूँगा असंभव ही है, क्योंकि मैंने खुद बहुत देखा है कितनी मैगजीन स्टार्ट हुई और बंद हुई, और उसको कंटिन्यू करना और किसी से बोलना कि आप मैगजीन में ऐड दो। हाउ वाज द जर्नी
ये आपने एक ऐसा क्वेश्चन मुझसे पूछ लिया जो कि मैं जब इसके बारे में सोचता हूँ तो थोड़ा नॉस्टैल्जिक हो जाता हूँ। बट आपने सही कहा कि प्रिंट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। और देखिए आज के टाइम में यू हैव टू इवॉल्व। हमने भी इवॉल्व किया, कोविड आया, हमने इवॉल्व किया डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे। आज हमारे सब्सक्राइबर्स वर्ल्ड ओवर इसलिए भी हैं क्योंकि हम डिजिटली बहुत एक्टिव हैं। हमारा ऑनलाइन पोर्टल है, हमारी सोशल मीडिया पे प्रेजेंस है, हमारा यूट्यूब पे चैनल है, जिसके द्वारा हम अपने सब्सक्राइबर्स को, ऑडियंसेस को एग्जीबिशंस के बारे में अवेयर करते हैं, उनको बताते हैं कि कौन सी जेन्युइन एग्जीबिशन कहाँ पे लगी है और उसके अंदर क्या कवरेज हो रही है। मैं एक बहुत आई वांट टू कम टू अ वेरी पर्टिनेंट क्वेश्चन। राघव, आपको देख के लगता है कि आपके पेरेंट्स भी आपके लिए बहुत कंसर्न रहते होंगे। आई मीन यू ऑल्सो कम फ्रॉम हम्बल बैकग्राउंड्स इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, जैसा कि आपने बताया था। हाउ वाज देयर रिएक्शन व्हेन यू स्टार्टेड योर मैगजीन एंड हाउ वाज दैट जर्नी? बिकॉज सी, business is a result of many relations and dimensions. Dreams achieve karna, there are a number of factors that affect your dream, and your journey. एब्सोल्युटली, आपने सही कहा। और पेरेंट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है, खासकर एक ऐसी सोसाइटी में जहाँ हम रहते हैं, वहाँ पे हमें अपने एल्डर्स की परमिशन, अपने एल्डर्स का एक कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है हमारे ऊपर। देखिए, जब मैं लीडिंग मीडिया में काम करता था तो मेरे पेरेंट्स को यही लगता था अब टाइम आ गया इसकी मैरिज का, और अब टाइम आ गया इसको और स्टेबल करने का, नेक्स्ट जॉब में प्रमोशन लेने का। बट उस दौरान मैंने ये फैसला किया कि मेरे को अपना बिजनेस करना है, मुझे एक पब्लिकेशन स्टार्ट करना है, और वो इसलिए करना है क्योंकि मुझे इमीडिएट प्रॉफिट नहीं चाहिए, मेरे को पैसा इमीडिएट नहीं कमाना है। मैं एक ऐसी इंडस्ट्री को जान गया हूं जिसको, इतनी बढ़िया इंडस्ट्री है जिसको पूरा इंडिया सलाम करेगा आने वाले 5 सालों में। और देखिए वही आपने उस चीज की नींव रख दी है यहाँ पे, क्योंकि ये एक अनऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री है जहां तक मेरे को पता है। एंड योर मैगजीन इज द ओनली मीडियम थ्रू व्हिच वन कैन एक्चुअली गेट टू नो everything under one roof. That's true. So that's a very huge achievement. Many congratulations to you for that. और मैं चाहूंगा कि आपके लाख से 10 लाख सब्सक्राइबर हो, प्रिंट में भी आप 5 लाख 10 लाख ऐसे कॉपीज बेचें। एंड मैं एक चीज पूछना चाहूंगा एट द एंड ऑफ दिस थिंग। आई नो दैट वी हैव टेकन some real very good information and shared it with our viewers, और अगर आपके साथ मैं डिस्कशन करूं तो शायद ये कई घंटों तक चलेगी, लेकिन समय की सीमा है, और उसी सीमा को नजर में रखते हुए आई विल आस्क माय लास्ट क्वेश्चन टू यू। व्हाट इज द थिंग दैट हैज ऑलवेज इंस्पायर्ड यू टू स्टैंड अप ईच टाइम यू फेल डाउन? देखिए, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो एक हर एंटरप्रेन्योर के दिल के बहुत करीब होता है, बिकॉज हमारी जर्नी में उठने से ज़्यादा गिरना और लिखा होता है। हम गिरते ज़्यादा हैं, और ये हमारी लाइफ का एक बहुत बहुत बड़ा एक फैक्टर रहता है। बिकॉज आप देखिए कि हम हर एस्पेक्ट में अगर आप बात करें, चाहे वो हमारे टीम हो, जिस टीम को हम लीड करते हैं, वहाँ से हमें भी बहुत वी हैव टू फेस अ लॉट ऑफ चैलेंजेस। चाहे वो एक्सटर्नल फैक्टर्स हों, जहाँ हमारे कंपटीशन है, वो मार्केट है जो हमेशा रेडी रहती है कब वो हमें ओवरपावर करे, चाहे वो हमारे अपनी खुद की मोटिवेशन हो। रियली यू फील रिजेक्टेड अ लॉट ऑफ टाइम्स, यू वांट टू गिव अप। बट मुझे हमेशा एक ही बात इंस्पायर करती थी, और वो थी स्वामी विवेकानंद की बात, गुड बेटर बेस्ट, नेवर रेस्ट टिल गुड बी बेटर एंड बेटर बी बेस्ट। Thank you so much, Raghav, and viewers, remember one thing: never be at rest till your good is better and your better best. But at the end of the day, one thing is very important, that comes with a lot of faith like what Raghav had in his dreams, and he's sitting here with us today. I thank my sponsors, Cloud Access, India's #1 cloud platform, rupiapaisa.com, changing the lives of people around the nation. Benson Trophies, the #1 trophy manufacturer in the country. Samay Enterprises, one of the best contractors that you can get across to fulfill your projects and your dreams. And definitely I love myself a lot when I wear a Tajiri suit. So thank you, Tajiri, and we'll be back with our next guest very soon. Until then, remember one thing, keep waiting forward. चलने का मतलब है सिर्फ आगे जाना, रिवर्स गियर कभी नहीं होता बिजनेस में। समय लगेगा, it will be a test of time, but then the story will be yours and the glory will be yours. We'll be back with our next guest soon. Wonderful souls like Piyush Bhattacharya, who are like gems in their own self. I think the Indian market is very interesting because it's developing extremely rapidly at the moment, and there's a very big shift in taste as well. Welcome back, viewers, to the second part of the third episode of Leaders Today Season 4. लोग जब घर खरीदते हैं तो कोई सीमा ही नहीं है. You can do away with a wonderful 3 BHK for a family of 4 in about 1,000 square feet, or you could also go in for a 5,000 square feet mansion for the same family.
डिफरेंस जो होता है वो आशाओं का नहीं होता, वो बेसिकली एक सेंस ऑफ अचीवमेंट का होता है, और दोनों ही चीजें बहुत सही है। ऐसा कहीं नहीं लिखा कि अगर आप एक बड़ा घर ले सकते हैं तो भी आप छोटा लें, आप छोटा ले सकते हैं तो भी बड़ा लीजिए, बड़ा ले सकते हैं तो और भी बड़ा लीजिए। जिंदगी कभी दोबारा नहीं मिलेगी, एटलीस्ट हमें ध्यान नहीं होगा कि हम कितनी बार पैदा हो चुके हैं, इसलिए हम जहां पे हैं उसका जो आनंद और लुत्फ ले सकें वो बहुत जरूरी है। बिकॉज यू नो having fun in life is equally important, and that is why we all work hard. And you know, exquisite dreams की कोई लिमिट नहीं होती। And with us today we have Piyush Bhattacharya, who is the founder of the brand Mamushka, which is an elite furniture brand. I mean right there, और उनके साथ और उसके साथ जो है they have been doing this business for a couple of years, and he has another business by the name of Noxia, and a factory that is there in Greater Noida since 2007, if I'm not wrong. And a very surprise guest with us today. We have Marco from Italy, who represents Zenota and Techno, which are the pioneering brands when it comes to design. You know, Italian design is that something that all architects and interior designers over here we strive for. Thank you so much, Marco. And Marco is you know, has come along with Piyush Bhattacharya. आपका बहुत धन्यवाद कि आप इनको साथ लेकर आए, because they are together will be working on some really amazing projects. और मुझे इस बात से सबसे ज़्यादा खुशी होती है कि you know, I am telling that I'm so happy that a friend from Italy, you know, from one of the pioneering design firms, recognizes another and is willing to see how you both can take the journey next step. Congratulations for that. बहुत बोल लिया, कैसा लग रहा है आपको with us today? It's wonderful being here. Although you know, journey has just started, we have not reached to where we want to reach. But yes, everything starts with a small step, and we have big dreams, big vision, and yeah, that's we just got started. Absolutely. And to learn, it's better to learn from the best. So that is why you have Marco over here along with you. Marco, how does it feel? I know you were not expecting where you were going to when he said I have to go somewhere, and you landed on the sets of Leaders today. So how do you feel about that? In fact, it was quite a surprise, but I'm happy to be here, and I think it's a very good opportunity for us to work with somebody who can make a difference in the market and who is daring enough to start something new with the right mindset and the right possibilities as well. So we think that we have a very good possible future with them, and they will without any doubt become a major player in the market in the next few years. I'm so happy to learn about that, because you know, like our Prime Minister has also been you know, taking India to the world, and the world coming to us, and we all joining together. Vasudhaiva Kutumbakam, that's what we believe in, that the whole world is one big and loving family, and this is standing proof of that. I'm so happy to see that this and I really pray that this you know, relation fosters to the next level. You've traveled all around the world, I'm sure, you know, because Italy is known for design, and one of the favorites of the world, the Ferrari, comes from Italy, if I'm not wrong. Yet handmade, still handmade. And how do you look at India, and how did you take that decision about, you know, stepping into this country and looking out for people, wonderful souls like Piyush Bhattacharya, who are like, you know, gems in their own self? I think the Indian market is very interesting because it's developing extremely rapidly at the moment, and there's a very big shift in taste as well. And when it comes to true design, maybe like 10 years ago, the Indian market was not ready for true design yet. But with the newer generation coming up, and they don't want the house to look like the parents' house and the grandparents' house, and they're more interested in products that have an intrinsic value rather than something that just looks rich. Absolutely. It's a very good time for design, and this is something that when speaking to them, we learned that we have the same philosophy on that as well. So that's when we learned about their plans, we absolutely knew that this was a correct partner for us as well to explore and to enter the market with true design, because true design is not just selling. It's a dangerous profession too, you know. I call it dangerous. What do you say, Piyush, regarding this? Because see, venturing into something like design
it's like a no man's land actually, if you ask me, because it's not for everybody. It's for seldom few. You know, I've been a branding consultant myself. I've seen designers, I've seen brand designers, graphic designers, architects, interior designers. I mean, it's a very, very special breed that needs to brood in a different way. But that also keeps you awake, you know. Yeah, absolutely. And how did you get into that entire sphere? That's something. Then you wait to to get up, and because that it's dangerous as you said, but it's also very interesting. Yeah. And there is no limit to that. This is such a creative field where it has no limit. In fact, even you can sit in a small room in maybe a small table. Absolutely. But then the limits are endless, and you can do there's no how can I say no repeat day when it comes to designing. It's every day is a new day. You're not doing anything mundane. You're not repeating yourself. It's an endless it's your own capacity, what you can see, kitna de sakte, where all you can reach. That is the entire thing. I say, when you said that we can, sitting in a small space also something can be done. You take a picture, we take a 4-inch by 5-inch Kodak picture from the photo camera. I can shoot the sky, which is millions of kilometers in breadth, or I could just focus on this teacup, which is just a few inches. So the capacity of the frame is as much as the capacity of the person who is viewing through the frame. I think it's all on the designer and on the artist on where one could reach. Infinity is the distance. True. So how did you get into this? Because I've seen very few people who are into manufacturing so daringly venture into design. See, I've always been a creative person since my childhood. I was good in drawing and creating things. In fact, even when I see a dish in even a restaurant, I start that. I will go to the owner. I will tell him, you can place this or arrange this dish in this way or in that way. It was just all the time, So I always like to create things, and like normal thing was always boring for me, so I always like to create. So I've been doing many things, but that creative urge was always, it was not fulfilled, So that's how I got into this. Any particular incident or something that reminded you or shook you out of that inertia where you were thinking that you want to do it, and then you said, no, now is the time, I've got to get into it. See, the thing is, I've been well traveled. So I've been almost to every corner of the world. And when I see things there, and then I wish, such beautiful things, why they are not here in India. In India. And here people are mostly, getting, doing the regular stuff because the market is so big. They hardly get time for the R&D and absolutely. Because whatever they are producing is all get sell. So when I used to see all these things, but they were so expensive. Not everyone can afford that thing, such beautiful things. Although India was also creating many beautiful things, but then the artisans had certain limitations. It was not an organized field. When you go abroad, you see designing, you see furniture, and you see machinery over there. It's a very important tool. Man, machine leads to motivation. Basically. So here it was more basically one individual skill set. So it was not on a mass scale or not for the organized sector. It was more of an unorganized sector. So that's where I feel there's a void that can be filled. So if we can bring these two together, the technology and the and this skill set, if we can just bring them together and give the skill people the best of the technology and in an organized way, then you could probably hit the next level. Yes, because now with all this new technology and with these new advancements and all these better roads and all, world is becoming smaller and smaller. It's not like earlier you stick to your own state because of the logistics, you cannot go beyond that. But today, even sitting in a small village in UP, you can cater to the whole India and also export. So that's how. तो जैसा कि आपने बताया कि बंदे एक बहुत ही अमेजिंग चीज़ आपने ऑब्जर्व करके बताई थी कि कि हमारे यहाँ जो ट्रेडिशनली लोग एम्पावर्ड हैं विद स्किल एंड क्राफ्ट, वो बहुत ही अमेजिंग है. और वहाँ पे आपने देखा कि अगर इसका मिश्रण टेक्नोलॉजी के साथ हो जाए
So that is where मतलब एक नई चीज उजागर हो सकती है, एक अच्छा सम्मेलन बन सकता है और जिसकी वजह से इंडस्ट्री को बहुत बेनिफिट मिल सकता है और इंडिया उस लेवल पे पहुंच के आगे भी जा सकता है। और जैसे कि मार्को आए हैं एंड कैन बी अ पार्टनर इन डिजाइन टू पीपल फ्रॉम द वेस्ट, जस्ट लाइक मार्को इज हियर फ्रॉम इटली रिप्रेजेंटिंग ज़ेनोटा। जैसे मैंने आपको कहा कि पहले वो सब अपने अपने एरिया में कन्फाइंड थे। तो हाँ। पता है कि सहारनपुर इज फेमस फॉर दिस फर्नीचर और मुरादाबाद इज फेमस फॉर दिस फर्नीचर, बट दे आर कन्फाइंड टू देयर ओन लिमिटेड स्पेस। लिमिटेड स्पेस। So that's what I felt कि if we can bring these together, then we can cut to the whole. We can take it to the India and then even to the world as well. Absolutely. There we can create it in more volume. It's in a more organized way. So where we can control the quality and the design and all that stuff. I would like to ask you, Marco, a small question. When we grow up in our country, and especially if we are students of art, we read a lot about Picasso, we read a lot about other Renaissance artists and all, Raphael and all those people, Michelangelo. We read a lot. So how important has been Indian art been in that part of the world? Like, do people really are aware of the kind of because the Indian perspective of making art, when I say perspective, it's not that one point perspective, but perspective in say that the way Indian artists saw and they painted was something really very fabulous. You can relate it close enough to something what the Egyptians did 5,000 years ago. So it's my own personal experience. So what do you say about that? Do you also study about different arts and cultures? Personally, yes. If I look at Europe as a whole, I think Indian art is a little bit on the back burner. I think most people, when they think about India, they think about a life philosophy, about spiritual. Yeah, Alexander's teacher told him, "Get me a teacher from India. A man of knowledge from India." Exactly. That's what it is all I think about. when it comes to art, there's still a lot to be discovered. There's a lot to be discovered. Absolutely. I travel a lot myself, so I can't say I studied Indian art, but I've been exposed to it. And I think that's the beauty about almost every culture. Every culture has some story to tell through traditions and art and painting and everything like that. And that's also a form of design. Yeah. Because if you can elaborate that a little bit further and put it into a visual of a product, it becomes a product that has a story to tell, which then likely can become a timeless product as well. And that's how design works in the end. Absolutely. Thank you so much for that insight. It was, what you said is very nice. When you add those pieces together and you figure out a possibility where it could reach next, that is when miracles happen and new things come about, right? Thank you so much for being with us over here on the show. Thank you, Marco, and I hope you have a great trip in our country and you will love every inch of it. I'm very sure. We're very, very hospitable people and it's a beautiful nation, right? So Sudarshan here signing off. We'll get back to you in the next episode 4 of season 4. Thank you to our sponsors, Cloud Access, India's #1 cloud platform, RupiaPaisa.com, changing the lives of people around the country. Benson Trophies, the #1 trophy manufacturer in the country. Samay Enterprises, one of the best contractors that you can get in touch with to build your office spaces and make your retail spaces dream come true. And definitely, well, this is a designer suit I'm wearing and I thank the genie for that. And I'll see you in the next episode. And until then, keep dreaming, keep taking a step forward. Even if it is 1 inch, it is still 1 inch further. See you.